आप देख सकते हैं कितना जूसी बना। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन, जो कि होने वाला है एकदम स्मोकी और काफ़ी जूसी। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट मैरिनेशन। विनेगर, ये नींबू, फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं अपने सेकंड मैरिनेशन की तरफ। तो खोल के देखते हैं। चिकन अच्छे से फर्स्ट मैरिनेशन हमारा हो चुका है। अब सेकंड मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं मिर्च। हम अच्छी खासी मिर्च खाते हैं, तो मिर्च डालेंगे। उसके बाद ये है लहसुन पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, सौंठ, ये कह सकते हैं अदरक पाउडर, और ये हमारा अनियन पाउडर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। दरअसल हमारा नमक सेंधा नमक है, तो ये कम लगता है। आप लोग बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें नमक को। अब बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। अब इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तो दोस्तों हमारा चिकन मैरिनेट हुए 2 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अब चिकन ओवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन को 200 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में ग्रिल कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन ओवन में ग्रिल होता है तब तक एक अच्छी सी स्वीट एंड सॉर डिप रेडी कर लेते हैं। तो आइए। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी खुशबू के लिए। और ये थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। तो ये हमारी स्वीट एंड सॉर डिप रेडी है। हमारा चिकन अब हाफ रेडी हो चुका है। इसको निकाल के देखते हैं। लॉक को ऐड करो। स्मोक खुशबू आ रही है ज़बरदस्त। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और वापस से ओवन में। चिकन को वापस से ओवन में कर देते हैं। 15 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे।
चेक करते हैं कि कैसा बना। दिखने में तो एकदम मस्त लग रहा है। वाह। दोस्तों हमारा चिकन रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। अब एक बार इसकी टेस्टिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे काट के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना जूसी बना है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। अमेजिंग। देखो, ये देखो किस तरीके से एकदम जूसी। नोटी। हम्म डिप का टेस्ट लाजवाब। चिकन के टेस्ट को एकदम इनहेंस कर दिया।